So today I will explain इन TIA पोर्टल S7-1200 PLC के साथ ET200 SP का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कैसे करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करेंगे ET200 में। अगर आप देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ET200 प्रोफिनेट कम्युनिकेशन विद S7-1200 PLC के साथ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आईओस में सीमेंस ने मल्टीपल कैटेगरीज दे रखी है, जिसमें ET200 SP अभी काफी लेटेस्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं। ET200 MP, ET200M, IO links, there are multiple type of, एंड ET200 में DIDO और इसके स्मार्ट फीचर्स हैं। और जो मेरा हार्डवेयर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह रहेगा। S7-1200 PLC के साथ मैं इसको प्रॉफिनेट ईथरनेट केबल के थ्रू ET200 को इंटरफेस करूंगा। मेरा हार्डवेयर डिटेल कुछ इस तरह से है। सिमेटिक ET200 SP मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन, इनपुट मॉड्यूल DI है और आउटपुट मॉड्यूल DQ है, आउटपुट डिजिटल है और वर्जन में TIA पोर्टल 18 यूज कर रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ कैसे यूज करना। तो सबसे पहले मैं अपना PLC सेलेक्ट करूंगा हार्डवेयर TIA पोर्टल में। सो S7-1200 PLC CPU में जाएंगे और मेरा जो PLC वो गया 1215 ACDC रिले। सो ये मेरा हार्डवेयर PLC हो गया जिसके थ्रू मुझे इसको इंटरफेस करना है। तो सबसे पहले मैंने PLC को सेलेक्ट कर लिया अपना हार्डवेयर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का हार्डवेयर सेटअप है। इट टेक टाइम। नाउ माय डिवाइस व्यू, नेटवर्क व्यू में हम लोग इसको अपने S7-1200 PLC को शो कर रहे हैं। सो बेसिक सेटिंग्स सबसे पहले हमको करनी पड़ेंगी। एक्सेस लेवल फुल एक्सेस देना पड़ेगा, अदरवाइज डाउनलोड ड्यूरिंग डाउनलोड देयर सम एरर। सो प्रोटेक्शन इज no need. Now I am disable protection and Ethernet address. Now Ethernet में add new subnet and this is my IP address 192.168.0.1 and this is my PLC IP address. So okay. Next, network view में now we are moving to network view and go to hardware catalog, and after that we are going to distributed IOs, and in distributed IOs we are searching for ET200 SP. ET200 SP, this is my interface module, and now we are going to interface module and right now we are using for PROFINET communication, so we are going to PROFINET communication. And my hardware is the hardware, if you are using, this is my hardware right now. So this is my hardware IM155-6 PNST. This is a schematic ET200 SP, and in this hardware there are some detailed information. So we are now going to ET200.1556.PNST. This is my hardware ET200 PNST. So this is my hardware. After that, these are three details are available, three module are available, and our module is this is 6AU02-0B and 0. So we are selecting correct module. This is my distributed IOS Profinet IMs 155 module. This is a, so double click. Okay. So now I double click on this for selection of, this is my ET200 SP. After that need to select input, output and server module. So what is my input? Here we can check. This is my input module DIST 8 into 24 volt DC, and this is my MLFB number for
Siemens. So we go to hardware catalog, ET200, no, this is ET200 SP, and so first of all I select my DI because this is hardware mainly related to software. So as it is, we are using hardware install, same just like we are using in our TIA portal software. So first of all my DI is installed. So same concept we are apply in DI 24 volt DC ST, and this is right now we are checking which one is our exact module, F010BA0. So you can see here F06B F01 0BA0. So this is my DI module. Right now drag and drop particular location. So exact location. After that we are selecting DQ, digital output, and digital output same just like 8 into 24 volt DC 0.5 ST. This is my another, this is DQ ST 8 into 24 volt DC 0.5A, and this is my MLFB number. So right now we are using F01, this is F010BA0. So we are selecting this DQ output. So we need to same, this is input, after that we are installing output 8 into 24 volt DC, and same MLFB number we are using. Same order we are installed, and after that if your DIDQ is finished, so last server module in termination. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, सर्वर मॉड्यूल एंड ऑफ द सर्वर मॉड्यूल इंस्टॉल, बिकॉज मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटेड आईओस है उसमें मैंने एक DI लिया है और एक DQ लिया है, डिजिटल आउटपुट लिया है, और एंड किया मैंने सर्वर मॉड्यूल से. अब ये डिपेंड कर सकता है मल्टीपल ऑफ इनपुट आउटपुट, बट प्रोसीजर एंड कॉन्सेप्ट सेम. सो नो नीड टू, so we are click. So first of all what we do, select Ethernet address, other parameters. So double click on ET200 SP module, and yes, this is Ethernet address, add new subnet, and we are selecting IP address. तो 01 मेरा PLC का एड्रेस है, सेम IP एड्रेस नहीं यूज कर सकते, उस सीरीज का मैं अनदर नंबर प्रोवाइड करता हूँ 03. तो ये मेरा IP एड्रेस असाइन हो गया है. ओके, so again we go to network view. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉट असाइन पे क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगे हम लोग प्रोफिनेट. सो ये मैंने क्या किया, पीएलसी पे क्लिक किया, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर दिया है. सो दिस इज माय आईपी एड्रेस 192.168.0.1 PLC IP address, and this is the my 192.168.0.3. this is my ET200 SP module. so दोनों के बीच में हमने प्रोफिनेट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दिया है, लेकिन अभी बीच में मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट. अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब तक ये सिस्टम मेरा काम नहीं करेगा, so I select, this is my select ET200, right click, and right click, after that we are setting assign device name. Without device name we cannot communication establish, because PLC don't know which because if multiple are IOs, distributed IOs are using, so we need to proper device name. Without device name is a very important part, device name, because device name के बगैर हम communication PLC don't know, because if we are using multiple distributed IOs and multiple communication, Profibus, Profinet, IO link, so device name is very important. Now we select device name.
wait few minutes. In the same literature I prepare in PDF format. This format is available in my LinkedIn profile, so you can easily download what procedure I apply. So you can easily find out in my LinkedIn profile, no issue. So this is device name. Right now we go to update list. The PLC by default they create one at device name, so we can use this is device name. ET200 SP device is a IO device 1. This PROFINET device name is a and IP address is a 192.168.0.3. So this is a correct and update list. Okay, so cancel. After that, if you are checking here, जैसे ही आप इसको डिवाइस नेम देते हैं आईओ टैग्स देखेंगे, आईओ टैग एड्रेस डिफाइन कर दिया है क्योंकि 0 से 1 आपका पीएलसी का आईपी उसने इनपुट आउटपुट एड्रेस डिफाइन किया है। तो इनपुट के लिए जो एड्रेस इस पीएलसी का यूज कर रहा है वो 2.0.1 2.3 2.7 एंड आउटपुट के लिए अगर देखें हम तो आउटपुट के लिए आईओ टैग्स Q.20 सो 8 चैनल का है तो 2.7 तक यूज कर रहे हैं हम लोग आउटपुट एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी हमारा ET200 का इनपुट एड्रेस है वो 2.0 से लेके 2.7 आप यहाँ भी कोई भी नाम डिफाइन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सेम आउटपुट पे भी आप आईओ टैग्स पे भी कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो मेरा ये कम्युनिकेशन नेटवर्क व्यू में जाते हैं तो ये मेरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। नाउ वी आर सेव एंड कंपाइल compilation. This is a very basic and simple method for PROFINET communication in Siemens TIA portal. Now you could download. Okay, this is my PLC. I select and load. So after that download, we are check in online mode what happened communication. So program is download. Let's check what happened. So go to online. If this is both are green, you can see here all are green, so means communication is established. If there is any air communication, so this is not green, means my I ET200 SP is communicate with PLC. If I give any input output address to command, they are totally working. So this is my short and simple method to explain ET200 to S7-1200 PLC communication. If you understand and like this video, please subscribe and like my video. Okay, thank you.